हमें लिबर्टी मेडिसिन से चाहिए. ओ माय गॉड, मेडिसिन से लिबर्टी चाहिए, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा. क्या तैयार हैं? सुनैना मैम, आर यू रेडी फॉर द चैलेंज अहेड to get liberty from medicine? Anybody else? Anything else that you want liberty from? I can see the few cameras off. Can I please have them on, please? It would be nice to interact with lovely faces in front of me rather than seeing the blackboard. I no longer want to go back to school. Okay. Lovely. So, okay, somebody wants liberty from overthinking. Disease and pain. Okay. कितने तरह तरह के आंसर आ रहे हैं. सबके प्रॉब्लम्स कितने अलग होते हैं, right? Just as human body is different for every person. Yes or no? Give me a thumbs up. Are the bodies same for you, me, and crores of people in the world? सबका बॉडी क्या सेम होता है? निरंजन मैम बोल रही है नहीं. तो क्या आप सेम दवाई खा सकते हैं जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं फॉर every same illness that you, me, and tons of other people suffer? Can we take the same medicine? Logically, do you think it's right कि आपको osteoarthritis हुआ, मुझे हुआ, and maybe 10 other people, and we are all taking the same medicine, as we are all sailing in the same boat, but फर्क एक जन को पड़ रहा है, दूसरे को नहीं पड़ रहा है. तो क्या रीजन है? What is the reason? कुछ तो रीजन है कि मेडिसिन तो खा रहे हैं बट एक को फर्क पड़ता है, दूसरे को नहीं पड़ता. The only reason is everybody is different and everybody has a different root cause for the same ailment. It's not necessary osteoarthritis हुआ तो degeneration तो ठीक है, हो रहा है, but root cause आपका मेरे से अलग हो सकता है. Does everybody agree with me on the same note? I think some people are looking strange. No, that they are not agreeable. Yes or no? सोचिए इस बात को. सोचने वाली बात है ना कि हर इंसान का बेसिक अलग होता है, तो रीजन भी अलग होता है फॉर वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम. प्रॉब्लम्स कॉमन है बट उसका रूट कॉज कहीं और होता है. तो हम करते क्या है अष्टांग चिकित्सा में? वी गो बैक टू आवर रूट्स. अभी सब लोग वापस रूट्स पे जा रहे हैं. इतने मॉडर्न हो गए हम, पर वापस रूट्स पे जाना ही पड़ रहा है. क्यों पड़ रहा है? क्योंकि देख रहे हैं मॉडर्निज्म से कोई फायदा नहीं है. डिजीजेस बढ़ रही हैं, हम खा रहे हैं बढ़िया से बढ़िया, फिर भी डिजीज बढ़ रही है. तो कुछ तो कारण होगा. हम अच्छे से एसी घर में रहते हैं, आराम से बड़े बड़े गाड़ी में घूमते हैं, फिर भी ट्रबल्स हमें हमारे पूर्वजों से बहुत ज्यादा है. तो आइए खोज लगाएं कि आखिर क्या चेंज हो रहा है कि ये चीज हमें परेशान कर रहा है. एंड वी नीड टू एड्रेस द रूट कॉज. तो हम लोग अष्टांग चिकित्सा में क्या करते हैं? वी डू द अष्टांग चिकित्सा में हम लोग प्राण शक्ति डायग्नोसिस करते हैं, यानी कि रूट कॉज डिटर्मिनेशन. So how do we do the root cause determination? This is done by Swami Raj Bibuji. क्या आप उनके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत? Anybody interested to know about Swami Raj Bibuji? And what exactly do we do in Ashtang Chikitsa? I just got one thumbs up. I'm not satisfied with that. So we are 78 of us. A few more thumbs up. If I get your permission, I'll definitely share the screen and let you know more about Ashtang Chikitsa. So quick, I'm just waiting for your permission. Okay. तो कुछ yeses आ गए. So just give me 2 minutes of your screen time and I will be sharing the details. Thank you so much.
Is it visible? Is the screen visible to everybody? It's visible. Okay. So Ashtaang Chikitsa, the online therapy for Neuro Musculoskeletal problems. आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कुछ न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए. आखिर आप इससे निजात कैसे पा सकते हैं? How can you get rid of your current symptoms that you are facing in your day-to-day lives? Namaskar, I welcome you all to the Ashtaang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. I'm sure many of us out here would agree to that. Ashtaang Chikitsa can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs functioning at optimum levels. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Bibuji, a rare Kumbhak yogi and an human exponents expert. So Swami Raj Bibuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, and even life-threatening diseases like cancer. आज तक हमारे पास इन डिजीजों के लिए कोई भी इलाज नहीं है. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtaang Chikitsa to address the structural issues of a human being. तो हम क्या कहना चाहते हैं जब हम बोलते हैं structural issues of a human being? So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way, that's our purpose at Avisa Healing and Fitness. So a profound way of addressing the aspects of a human body. Now, who is this webinar for? ये webinar आखिर है किसके लिए? For people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. So reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtaang Chikitsa. Freedom from pain and medicine. Swamiji will talk about the 8 sharir softwares. जो हमारा body है उसमें ये 8 softwares है जिसका functioning has to be at its optimum level so that we are disease free. So क्या है ये 8 शरीर? इसके बारे में विस्तार से आप सुनेंगे स्वामी जी से. अभी मैं सिर्फ आपको इनके नाम बताती हूँ. So what are the 8 शरीर? सृष्टि शरीर, गर्भ शरीर, दोष शरीर, मर्म शरीर, प्रमाण शरीर, संख्य शरीर, प्रकृति and the विकृति शरीर. So the last 2 sharir is very, very important. Prakriti sharir yani ki the regeneration factor of your body. सबको मालूम है, especially for women, post 50 after menopause, degeneration चालू हो जाता है और joint pain वगैरह surface में आता है. विकृति शरीर is the degeneration factor. तो आपको कब ये पेन्स वगैरह होते हैं? जब ये रीजेनरेशन और डीजेनरेशन फैक्टर्स में इम्बैलेंस होता है. तो अब क्वेश्चन है कि ये इम्बैलेंस क्या ठीक हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है. यही हम करते हैं अष्टांग चिकित्सा में कि आपका जो डीजेनरेशन और रीजेनरेशन फैक्टर है उसको हम लोग बैलेंस में लाते हैं. सो अष्टांग चिकित्सा कैन हील. Of course, the list goes on and on, but these are
some of the common diseases: knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine related issue, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, the nerve issues. So let's hear from Swami Raj Bibuji. वो क्या बताते हैं हमें अपने करंट सिचुएशन से बाहर निकले के लिए, क्या उपाय है हमारे पास. Thank you so much for listening to me patiently. Now I would just tell you the sequence of the webinar. After this, you will be listening to this recorded video of Swami Raj Bibuji, where he will be telling you about what Ashtaang Chikitsa is all about in detail, about the artist Sharir. And then we are going to have a live testimony who is going to join us today in the webinar, who has done the Ashtaang Chikitsa course and how he or she has benefited by it. Of course, we will have the program details after that. And consequently, Swami Raj Bibuji himself will be joining us live to answer all your questions. तो अभी के लिए आप अपना नाम, नंबर और जो भी प्रॉब्लम्स है आपका, उसको प्लीज चैट बॉक्स में लिख डालिए. Thank you so much. Namaste, and over to Anil ji to share the video. So let's start. Neuro Musculoskeletal problem. We are talking about Neuro Musculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक example से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और अ स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था. रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी. लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो करेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, and he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों हो जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body.
If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका reason ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहाँ पे? आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज एन इशू विथ डाइजेशन. नाउ रचना जी सेड आफ्टर मेनोपॉज osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. हार्मोन इंबैलेंस होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, लोअर बैक पेन एंड योर नी पेन कैन हैपन. सो व्हाट आर यू डूइंग टू बैलेंस योर हार्मोन्स? देयर इज नो वे, कोई तरीका नहीं है. नाउ इफ द ऑस्टियोपोरोसिस हैज हैपेंड, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. इफ दे हैव बिकम ब्रिटल बाय कैल्शियम, हाउ मेनी पीपल हैव कम आउट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtaang Chikitsa. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें सर. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस scale में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtaang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always sharira. Both body and mind complex is called as sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there.
तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as प्रकृति, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti, and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो. योर बॉडी डजंट वांट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर. इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? व्हाट डू? यू डू लॉन्ग एक्सहेलेशन. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर हॉलीडे के लिए आप हिल स्टेशन में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. Do you think your body wants to inhale more or exhale more? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बंद तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to: a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do?
somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold. It is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtaang Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuro Musculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, इफ यू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट इवन वॉक स्ट्रेट. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है. Nabhi, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती disaligned हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें disaligned हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा ना.
आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel, but nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of Cowdy or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें. जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यस और नो? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtaang Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go to the third part, Pramana. Now one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, Pramana Sharira, Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana. चौथे पे आ गए हम, Pramana. Pramana means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार. Density. इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as Sapt Dhatu. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के tissues हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है.
आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को, देयर इज नो मेडिसिन, देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन, दवाई हो ही नहीं सकती है। सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली, आपको अंदर काम करना पड़ेगा। अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं, यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? बट पीपल इनटू स्पोर्ट्स एंड वेट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, दे आल्सो गेट डायबिटीज, दे आल्सो गेट हार्ट अटैक। 40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है। एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन। एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला। सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें। नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस, अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से, मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड, कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस एंड ट्राई टू पुश योर लेफ्ट पाम वेरी हार्ड। जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को, पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए। हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ ऑफ पुशिंग? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ, यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ बिहाइंड। करके देखिए दोबारा, अगेन डू इट अगेन, सी, पुश इट हार्ड, यू होल्ड योर ब्रेथ। सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ, वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना, यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट। बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट। सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, तो ये भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? Weight कैसे lift करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally. Your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtaang Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions.
muscle and nerve junction, muscle and bone junction, two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना, दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में, lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये जंक्शन पॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक मूवमेंट ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called murmurs. So murmur needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your murmurs are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा, तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए, if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम marma, Ashtaang Chikitsa में, there is a part in Ashtaang Chikitsa, there is a part called as Anganyasa and Marma Vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtaang Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है. WhatsApp यूनिवर्सिटी, Facebook यूनिवर्सिटी, YouTube यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called Vata, Pitta, Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए, how do you control this movement?
by holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए, yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you will get a joint pain relief. Temporary, it's little temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is neuro degeneration, degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, a lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूँ जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part or the 7th Sharira. It is called as
Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now been busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे ग्रेविटी के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? हाउ विल यू फील इन योर बॉडी एंड माइंड? यू विल फील हेवी, पुल्ड बाय ग्रेविटी. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. विल नॉट फील लाइट. हाउ विल यू फील? हेवी. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे हेवी फील करेंगे. वेयर विल द हेवीनेस इंपैक्ट? ये हेवीनेस कहां असर करेगा आपके जॉइंट पे? इट विल इंपैक्ट द जॉइंट. यस और नो? This heaviness is called as
Stress, STRESS. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So, are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So, I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organ function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose. In Prana Shakti diagnosis, यही Prana Shakti diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that, you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do Prana Shakti diagnosis. And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यास. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtaang Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently.
Now I would like to invite Upasana ma'am. Are you able to hear me? Upasana ma'am. She has been doing Ashtaang Chikitsa. Upasana ma'am, are you there? Okay, Revati ma'am, you can join in first and then maybe I'll just put you on spotlight. Revati ma'am. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Thank you so much for Good joining. evening, ma'am. Good evening. Yeah, Rachna, ma'am. First, I joined with you for the knee pain and I cured. Yes, if you remember me. Yes, In yes, the- ma'am. Yeah. And now I joined this Ashtaang Chikitsa. When I joined on 18th July. After starting this, I'm feeling so energetic. And even after doing this Vat schedule 1, module 1, that time after that, my shoulder pain disappears. I only don't know how I stopped my medicine. Actually, I was taking Ayurvedic medicine only, but that is also I have stopped already. And when in the second module, Pitta, in the last week, as Swamiji told, when you concentrate on middle of the heart, as you just think that sun is rising, means like that only I was thinking and doing, but my experience was very amazing. It was very nice. So I feel that everyone should join this Ashtang Chikitsalaya and you can cure the body. Thank you so much, Revati ma'am. Yes, I think Zoom user is Upasana ma'am, right? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so you can, I'll just, yes. Thank you for Yeah, joining. first of all, ma'am, I would like to thank you, Swamiji, and your whole team, because I was suffering from many diseases and especially body pain. And that is the reason I joined Ashtang Chikitsa. But I got much relief in my diseases. Yesterday, I had gone to the doctor. He has stopped my medicine for diabetes as well as for triglyceride. And it was really unbelievable that my medicines can be stopped so early. Because on 4th July, I have joined Ashtang Chikitsa. And it's just 18th of August, I am getting rid of medicines. So it's really a miracle for me and I'm very happy. And really, I sincerely thank all of you and Swamiji, especially Swamiji. Thank you so much, Upasana ma'am. And the participants are hearing from Upasana ma'am. She joined for neuromuscular and she has already started benefiting in diabetes and triglyceride. So you can understand that there are a lot of hidden benefits of Kumbhak as well because you're working on your internal self. So the moment you start strengthening your system, बहुत कुछ चीजें healing होना शुरू होती है जिसके लिए आपने शायद सभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज भी heal हो सकता है. So that's all I have to say. Thank you so much, Upasana ma'am, for joining us and giving us your time. My pleasure, ma'am. And now I would like to request Anil ji to please share the program details. Yeah, just give me a few seconds. Ashtaji, are you able to see my screen? Yes, I'm able to see your screen. Okay. If you can mute other participants, that will be great. Yes, yes.
Anil ji, they are not able to hear. Okay. Are Yes, you able now to? you're audible. Now you're audible. Okay. So shall I go back? Yes, it's better if you go back. Okay. Just give me a few seconds. We were here? Yes, now I'm able to hear you. Okay. So इस प्रोग्राम में 3 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3. मॉड्यूल 1 है वात के बैलेंस करने के लिए, पित्त बैलेंस करने के लिए है मॉड्यूल 2, और कफ बैलेंस करने के लिए मॉड्यूल 3. कुछ लोगों का सवाल होता है कि इस पे से हमने क्या चूज करना है. सेपरेटली ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं. यू हैव टू स्टार्ट विद मॉड्यूल 1 ओनली. सभी मॉड्यूल्स कंप्लीट करने होते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. ड्यूरेशन क्या है? 10 वीक्स का. इट्स अ टोटल ड्यूरेशन ऑफ 10 वीक्स. 9 + 1, 9 for 3 modules, 1 week extra. Why 1 week extra? We'll get to know. There will be 2 live classes every week, out of which 1 will be the learning class and 1 will be the mentoring class or the practice class. प्रैक्टिस क्लास में सभी ने कैमरास ऑन रखने होते हैं ताकि हमारे जो एक्सपर्ट मेंटर्स हैं वो आपको देख पाए और आपको फीडबैक दे पाए कि आप करेक्टली कर रहे हैं या नहीं. नेक्स्ट स्टेप्स, आगे क्या करना है आपने? प्रोग्राम फी पे करनी है और एक वेबिनार स्पेशल प्राइसिंग है. जो लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल प्राइसिंग है. उसके बाद आपने भरना है पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म. देन यू हैव टू फिल द पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म and we'll create login credentials for course access. सभी क्लासेस रिकॉर्ड की जाती हैं और उसके लिए लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए आपका ईमेल और फोन नंबर चाहिए होता है. एंड देन यू स्टार्ट योर क्लासेस स्टार्टिंग विद मॉड्यूल 1. मॉड्यूल 1 के साथ आप शुरू करते हैं. ये तो स्टेप्स हो गए. टोटल क्लासेस 6 क्लासेस, out of which 6 classes for module 1, 6 for module 2 and 6 for module 3. Total 18 classes plus 1 customization class. What is a customization class? We'll get to know it in a short while. Customization class क्या होती है थोड़ी देर में हम जानेंगे. Class start date for the 94th batch. 94th batch शुरू हो रहा है मंडे 22 अगस्त को. 22nd August Monday we are starting the batch, and after that module 2 will be started, then module 3. Mentor classes, क्योंकि मेन क्लास मंडे को है, मेंटर क्लासेस थर्सडेज के लिए, मॉड्यूल 1 के लिए. मॉड्यूल 2 के लिए मेंटर क्लासेस फ्राइडेज को और मॉड्यूल 3 के लिए मेंटर क्लासेस सैटरडे. ये सभी डिटेल शेयर किए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में और जूम चैट के ऊपर. क्लास एक्सपीरियंस, जैसा कि आप जान चुके हैं कि ये लाइव सेशंस होंगे. हमारे मेंटर्स आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ताकि आपको करेक्ट कर पाए. अब यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहूंगा. काफी लोगों का ये सवाल होता है, एक दिमाग में कशमकश होती है कि क्या ये थेरेपी ऑनलाइन में पॉसिबल है. जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि 1600 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी एनरोल करके अपना कंप्लीट प्रोग्राम कर चुके हैं और काफी ऑलरेडी कर रहे हैं. तो यस, दिस इज कंप्लीटली पॉसिबल एंड वी आर एक्सपर्ट्स एट ऑफरिंग दीज सर्विसेज. और अभी हम जानेंगे कि इसमें कैसे पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है. आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन मिलती है इंग्लिश और हिंदी में, जिसको आप डाउनलोड कर प्रिंट आउट लेकर देख सकते हैं. सेशन रिकॉर्डिंग्स होती हैं. आप जो भी क्लासेस अटेंड करते हैं लाइव, उनकी क्लासेस रिकॉर्ड की जाती हैं ताकि आप बाय चांस दोबारा देखना चाहें या फिर अगर किसी कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसके अंदर आप क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं लाइव, तो भी आप इन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं. एक्स्ट्रास, काफी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो आपको एक थेरेपी के क्रियास के अलावा मिलती है. मेंटल प्रैक्टिसेस मिलती है, यूनिक डाइट पर्सपेक्टिव मिलता है. माइंड यू, ये डाइट प्लान नहीं है क्योंकि इसमें डाइट प्लान हम नहीं देते हैं. एक पर्सपेक्टिव होता है. स्वामी जी का एक वीडियो मिलता है जिसमें बताया जाता है कि आपने खाने को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि वो आपको सपोर्ट करे, बॉडी को सपोर्ट करे बजाय नुकसान के. फिर कुछ सिंपल डिटॉक्स प्रोसेसेस होती हैं और काफी नॉलेज शेयर की जाती है आपके साथ. इससे पहले कि मैं फीस अनाउंस करूं, एक नजर डाल लेते हैं कि हम ऑलरेडी कितना एक्सपेंस कर रहे होंगे अपनी डिजीज को मेंटेन करने के लिए, स्पेशली इफ वी आर इनटू एलोपैथी.
तो यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं, कुछ फिगर्स लिखी है, ये ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिटी ऑफ योर रेजिडेंस, आप कहाँ किस सिटी में रहते हैं, किन डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करते हैं। तो इसमें फीस तो इसमें लिखा है 6,000 to 12,000 एवरी ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी ईयर। 6,000 से 12,000 शायद हम डॉक्टर की फीस पे कर रहे होंगे, फिजियोथेरेपी 12,000 से 30,000 अगर आप फिजियोथेरेपी कराते हैं, मेडिसिन 15,000 से 30,000 की शायद आप पूरे साल भर में इस्तेमाल कर रहे होंगे, और टोटल करेंगे इसको तो 33,000 से 72,000, 33,000 to 72,000 एवरी ईयर वी कुड बी स्पेंडिंग जस्ट टू मेंटेन द डिजीज। और साइड इफेक्ट्स जो एलोपैथी मेडिसिन के होते हैं उसकी सबको पता है, तो उसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने ये क्यों शेयर किया आपके साथ, क्योंकि जो ये थेरेपी जो प्राइस जो फी में आप अनाउंस करने वाला वो इतना अफोर्डेबल होगा, और जो आप ऑलरेडी एक्सपेंस कर रहे हैं, जो कि एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, एक परमानेंट सोल्यूशन एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। इसीलिए थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए मैंने ये आपसे शेयर किया। एक चीज और बहुत जरूरी है जो मैं साझा करना चाहूंगा आपके साथ, कि ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए नहीं है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये किन लोगों के लिए है। देखते हैं, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ मैजिक पिल एंड वांट रिजल्ट्स टुमारो ओनली। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इतने सालों से जो हम दवाई खा रहे हैं तो आदत बन चुकी है कि कुछ दर्द हुआ, कुछ पेन हुआ, तुरंत एक दवाई खा ली। एलोपैथी मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, और दर्द दूर हो गया, चाहे वो थोड़े समय के लिए हुआ हो बट वो दूर हो गया। तो ये आदत बन चुकी है, तो कुछ भी चीज हुई, सिर दर्द होता है, खांसी जुकाम कुछ भी होता है, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं, एक क्लिनिक, एक डॉक्टर और हॉस्पिटल आपको इजीली अवेलेबल होता है। तो वो हमारे दिमाग में घुस चुकी है कि दवाई खाइए, प्रॉब्लम दूर कीजिए। तो ये मैजिक पिल नहीं है, ये आपको अपने शरीर के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो रिजल्ट इसमें धीरे धीरे मिलता है। ओके, एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन देयर बॉडी। जो लोग अपने शरीर के ऊपर, अपनी हेल्थ, अपने जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं या अपना जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, तो ये भी उन लोगों के लिए नहीं है। एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु कैन नॉट इन्वेस्ट 60 to 70 minutes एवरी डे ऑन देमसेल्व्स। ये जो क्रियाएं हैं इसमें समय लगेगा, और क्योंकि ये नई क्रियाएं हैं, एक नई चीज है आपके लिए, तो आपको थोड़ा और भी ज्यादा समय लग सकता है। एक बार आप इसको कंठस्थ कर लेते हैं, बाय हार्ट याद कर लेते हैं, उसके बाद समय कम लगेगा, बट इतना समय आपको देना होगा। ये क्यों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्यों साझा कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, मुझसे बात करते हैं कि इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा, कुछ आप आसान तरीका बता दीजिए। आसान तरीका हमारे पास नहीं है, ये एक परमानेंट तरीका है जिससे आप अपने बीमारी से इजाद पा सकते हैं। तो आपको अपना समय इन्वेस्ट करना, एंड माइंड यू मैं इन्वेस्ट बोल रहा हूं, मैं आपको एक्सपेंस या खर्च करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। समय जो है इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है, एक्सपेंस का रिटर्न नहीं आता है। So that's why 60 to 70 minutes every day, an investment in yourself to come out of your ailments, your disease and pains. And this is not for those who are impatient. Impatient लोगों के लिए नहीं है। काफी लोग यहाँ पर इस वेबिनार में तो नहीं है, पर काफी लोग, जैसे स्वामी जी का वीडियो चल रहा होता है, सब कुछ होता है, कहते हैं कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। अगर आप इम्पेशेंट हैं, आप कुछ सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। आप एक चीज ट्राई करेंगे, दूसरे को इम्पेशेंट है, तो यू विल कीप ऑन जंपिंग द प्रोग्राम्स। एक परमानेंट सोल्यूशन कुछ चाहिए, पेशेंस जरूरी है। दैट्स व्हाट आई वांट टू इंप्रेस अपॉन यू। एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ फ्री ट्रीटमेंट और जस्ट सम टिप्स। यहाँ इसको थोड़ा मैं और डिस्कस करना चाहूंगा। काफी लोग अबाउट 60 to 70% लोग ऐसे होते हैं हर वेबिनार में, जो कुछ टिप्स लेने आते हैं कि शायद कुछ टिप मिल जाए, और फिर दूसरे एक्सपर्ट्स का वो वेबिनार अटेंड करते हैं, वहां भी कुछ टिप्स लेते हैं। और ये बहुत सारे लोग होते हैं वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, टिप्स कैसे हैं। देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी थेरेपी अलग तरीके से काम करती है। एक एक्सपर्ट कुछ बोलेंगे, दूसरे एक्सपर्ट कंप्लीटली ऑपोजिट, तो आप किसको फॉलो करेंगे, राइट? तो इसीलिए कोई भी बीमारी दूर नहीं होती है जस्ट टिप्स से। ये आपकी एक इंटरनल क्रॉनिक एलिमेंट है, जो न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स है। एलोपैथी ज्यादातर केसेस में कहती है कि ये ठीक नहीं हो सकती है।
तो अगर आप टिप्स पे काम करेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा? एक होलिस्टिकली, अभी उपासना मैम ने अपना टेस्टिमोनियल शेयर किया, एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनका न्यूरोमस्कुलो के साथ, पेन के साथ उनका डायबिटीज का टैबलेट हो गया। तो प्रोग्राम तो ज्वाइन किया था उन्होंने, न्यूरोमस्कुलर डायबिटीज कैसे हो गया? बिकॉज ये पूरा होलिस्टिकली पूरे शरीर के ऊपर काम करता है, पूरे इंटरनल सिस्टम के ऊपर काम करता है, इसलिए जो भी सेकेंडरी इश्यूज हैं उसको भी ये एड्रेस करता है। तो ये बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, तो इसको आप टिप्स के तौर पर ना समझें। दैट इज व्हाट आई वांट टू इंप्रेस अपॉन यू एंड से इट वेरी क्लियरली। अब हम देखते हैं हमें मिलता क्या है पूरे प्रोग्राम में। प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन, दिस अलोन can be, you know, the worth the whole cost of the program। सिर्फ प्राण शक्ति डायग्नोसिस ही अगर आप देखें पूरे प्रोग्राम की कॉस्ट के बराबर ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे पता लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपके हेल्थ इश्यूज हैं, वो किस कारण से है। ज्यादातर जो ट्रीटमेंट होते हैं वो या तो पता नहीं लगा पाते हैं कि कारण क्या है, जड़ क्या है बीमारी की, या वो नहीं तरीका नहीं पता होता है। तो ये प्राण शक्ति डायग्नोसिस होता है, एक नॉन मेडिकल डायग्नोसिस होता है। इसमें आपको एक फॉर्म मिलता है, एक फॉर्म का लिंक मिलता है और आपको एक्सपेरिमेंट्स करने को बोला जाता है आपकी ब्रेथ, सांस के ऊपर और इमोशंस के ऊपर, और वो रिकॉर्ड करना होता है उस फॉर्म के अंदर। उसके साथ एक सेल्फी फोटोग्राफ शोल्डर एंड अबव, जिसमें आपका फेस क्लियरली दिखाई देता हो। अगर आप स्पेक्स लेते हो तो स्पेक्स नहीं पहनने हैं, एंड इन केस ऑफ लेडीज नो मेकअप। ये दो चीजें जब स्वामी जी के पास आती हैं तो वो पता लगा पाते हैं कि जो 84 फोर्सेस हैं, आपको याद है कि उन्होंने अभी जो वीडियो हमने चलाया था स्वामी जी का, 84 फोर्सेस की बात करते हैं। एक उदान फोर्स का उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि 84 फोर्स में से कौन सी फोर्स वीक हो गई है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए हैं। तो एक बार वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो एक सोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, वीकली 1 मेन क्लास ऑफ 60 to 90 मिनट्स। हर वीक 60-90 मिनट्स की क्लास 60 मिनट्स की होती है, 30 मिनट्स लग जाते हैं क्वेश्चंस को एड्रेस करने में, क्वेरीज होती हैं, तो लगभग 90 मिनट की क्लास होती है। वीकली 1 प्रैक्टिस क्लास, अगेन 60 to 90 मिनट्स। ऑनलाइन कोर्स एक्सेस फॉर 6 months। सभी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, जैसा कि ऑलरेडी बता चुके हैं, और उसका एक्सेस आपको मिलता है एक लॉगिन और आईडी और पासवर्ड के थ्रू, जो 6 महीने तक आपके पास रहता है। और 6 महीने इनफ टाइम है आपको सभी क्रियाओं को कंठस्थ करने के लिए। यू बी एबल टू लर्न ऑल द क्रियाज बाय हार्ट विद इन 6 months। इट्स इनफ टाइम, मोर देन इनफ। तो आपको ये एक्सेस मिलता है सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग का। वीडियोज ऑफ ऑल क्रियाज डन इन द क्लास, ये कैसे अलग है क्लास रिकॉर्डिंग से? क्लास रिकॉर्डिंग तो पूरा 90 मिनट्स का ड्यूरेशन का है, बट यहां पर जो क्रिया सेपरेट एक एक क्रिया है उसके वीडियोस अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि आपने 90 मिनट का एक वीडियो देखना है ये जानने के लिए कि एक पर्टिकुलर क्रिया कैसे की जाती है। तो एक उसके बजाय आप एक वीडियो चला सकते हैं, जो हो सकता है 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, तो आप टाइम सेविंग करते हैं। तो अलग अलग क्रियाज की वीडियोस मिलते हैं। रिटन इंस्ट्रक्शन मिलती हैं हिंदी और इंग्लिश में, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं डेली क्रियास को करने के लिए। कुछ लोग वीडियो से सीखना पसंद करते हैं, कुछ लोग रिटन इंस्ट्रक्शन, रिटन कोई वर्ड है उससे सीखना पसंद करते हैं। तो जो भी आपका तरीका है, यू कैन डू दैट। Private WhatsApp group to ask doubts, questions, 6 days. This is the main, what do you say? This is the main place where you'll get all your doubts clarified. ये एक ऐसी जगह है जो WhatsApp ग्रुप है, जैसे ही आप एनरोल करते हैं आपको WhatsApp ग्रुप में ऐड किया जाता है, जो क्लास WhatsApp ग्रुप कहलाता है। जैसे कि आपको पता चल चुका है कि दो दिन आप लाइव रहेंगे हमारे साथ, बाकी 5 दिन जब आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस समय अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट, कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन कुछ आता है तो क्या करना है, आपने इस ग्रुप के अंदर पूछना है। हमारे जो एक्सपर्ट मेंटर्स हैं इस ग्रुप के अंदर ऐड होते हैं, वो आपको आंसर करते हैं, गाइड करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो वो आपको कॉल भी करते हैं। तो ये 6 डेज, संडेज ऑफ होता है, आप क्वेश्चन डाल सकते हैं बट आंसर होगा मंडे। इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग फीडबैक, एक फॉर्म मिलेगा आपको जो डेली प्रोग्रेस आपकी ट्रैक करने के लिए अपने इसमें फिल करना होता है। Then therapy customization for each participant in the 10th week.
काफी लोगों का ये सवाल हो सकता है कि अगर सभी की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं तो एक प्रोग्राम कैसे? जो थेरेपी कस्टमाइजेशन है उसका क्या मतलब? आपको अगर याद हो, जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि प्राण शक्ति डायग्नोसिस, जिसमें डायग्नोसिस होता है, तो उस डायग्नोसिस के आधार पर सभी पार्टिसिपेंट्स की उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से, उनके सिस्टम के हिसाब से और उनके डायग्नोसिस के हिसाब से 10वें हफ्ते में ये थेरेपी को फाइन ट्यून किया जाता है। सभी पार्टिसिपेंट के अलग अलग उसको फाइन ट्यून करके कस्टमाइज किया जाता है 10वें हफ्ते में। 10वें हफ्ते में क्यों है? क्योंकि जो 9 हफ्ते हैं उसमें शरीर को तैयार किया जाता है ताकि आप ये कस्टमाइज्ड प्रैक्टिसेस कर सकें, ये आप रिसीव कर सकें, इसलिए 10वें हफ्ते में किया जाता है। आप फॉर्म भरेंगे फर्स्ट वीक में, इसका यूज होगा 10th वीक में। एंड बाय द वे, अगर ये जो मैं बता रहा हूं आपको, इसको अगर आप फिर भी क्लियर नहीं है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप कर सकते हैं और आपका नंबर शेयर करेंगे, उसमें मेरा नंबर भी होगा, मुझसे आप कल को बात भी कर सकते हैं। देन 10th पॉइंट, एक्सटेंडेड सपोर्ट फॉर 30 डेज इवन आफ्टर द प्रोग्राम इज ओवर। देखिए, काफी लोग ऐसे होते हैं जो उसी वजह से क्लास अटेंड नहीं हुई, ना ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसके लिए भी 30 डेज का एक्स्ट्रा हमारी तरफ से सपोर्ट है। इवन अगर आपने अटेंड भी किया है तो भी सपोर्ट रहता है, क्योंकि कुछ होता है कहीं भी, जैसे अगर आपको अपनी क्लास याद हो, आपके स्कूल टाइम में या कॉलेज के टाइम पे कुछ चीजें रह जाती हैं जो क्लियर नहीं होती हैं, तो अगर एक्स्ट्रा टाइम मिले आपको तो आप वो कर पाएंगे। तो इसलिए 30 डेज का एक्स्ट्रा सपोर्ट रहता है, एंड दिस इज फ्री ऑफ चार्ज, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। एंड ऑल दीज पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये सभी मैंने 10 के 10 पॉइंट शेयर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। प्रोग्राम फी फॉर अष्टांग चिकित्सा, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, 14,500 ओनली फॉर द कंप्लीट प्रोग्राम। प्राण शक्ति डायग्नोसिस भी है, थेरेपी कस्टमाइजेशन भी है, 19 क्लासेस भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर सपोर्ट भी है 6 डेज अ वीक, एंड देन 30 डेज का एक्सटेंडेड सपोर्ट है। बट जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एक वेबिनार स्पेशल प्राइसिंग है, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अफोर्ड कर पाए और इसका बेनिफिट ले पाए। वो क्या है? लेट्स सी, जस्ट 6,500 एंड दिस इज वैलिड टिल 12:30 PM डे आफ्टर टुमारो। 20 तारीख तक ये वैलिड है। एक मैंने थोड़ी कैलकुलेशन की है यहाँ पर कि अगर हम उसको 6,500 को डिवाइड करते हैं बाय 19 क्लासेस, 342 सिर्फ एक फी निकल कर आती है इसमें से। अब एनरोल कैसे करना है? प्रोग्राम फी पे करते हैं आप, उसके रिसीप्ट को व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, एंड देन उसके बाद पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म आता है। नेहा जो हमारी टीम में है वो आपको ऑनबोर्डिंग फॉर्म भेजेगी, और उसके बाद आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पेमेंट डिटेल शेयर किए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में भी और जूम चैट के ऊपर भी। अब यहाँ पर थोड़ा मैं रुकूंगा अपनी टीम के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये ऑनलाइन में कंडक्ट किया जाना है, इसलिए प्रॉपर टीम का होना बहुत जरूरी है। रचना श्रीमन बोत्रा वो प्रोग्राम डायरेक्टर है और जो इस वेबिनार की होस्ट भी हैं। शालिनी भागवत, शी इज द क्लास मैनेजर। आपकी क्लासेस अगर चेंज होनी है, टाइमिंग्स एवरीथिंग, तो शी इज इन चार्ज। पूजा चोपड़ा सीनियर मेंटर हैं, रंजना स्वयं अनदर मेंटर, सुकेश राज अनदर मेंटर, आर.डी. गुप्ता जी अनदर मेंटर, सोनी छाबड़िया अनदर मेंटर। सो मेंटर्स की पूरी टीम है। ऐसा नहीं होगा आपको कि जैसे काफी स्टूडेंट्स हो जाए और आपको अटेंड ना कर पाए, राइट? तो इनफ मेंटर्स हैं हमारे पास ताकि आपको एक को अटेंशन मिल सके, बिकॉज ये थेरेपी है तो अटेंशन जरूरी है। नेहा उपाध्याय जो है वो हमारी एनरोलमेंट मैनेजर हैं। वो ज्यादातर जो बातें होंगी क्लास स्टार्ट करने से पहले तक नेहा से होंगी, अनिल चौहान या मुझसे होंगी। और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन अगर आप टाइप कर सकें, अगर जैसे अभी स्वामी जी लाइव होंगे जो क्वेश्चन आंसर करेंगे, बट अगर आपका क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, सवाल का जवाब नहीं यहाँ मिलता है, तो उसकी आपने टेंशन नहीं करनी है। आपने अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप करना है और हम आपके सवाल का जवाब वहां पर देंगे, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए है। स्वामी जी पूरा दूसरे वेबिनार में जाना होता है इसके बाद, तो वो पूरा टाइम शायद ना दे पाए। तो अगर क्वेश्चन आपका आंसर नहीं होता, डोंट वरी, आप टाइप करें आप व्हाट्सएप ग्रुप में। हिमांशु रेड्डी इज द टेक्निकल पर्सन। आपके जितने भी वीडियोस हैं उसके आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये सब का जो उन्होंने
ही इज द राइट पर्सन। और अगर आपका वीडियो प्ले नहीं होता है, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है एक्सेस करने में, हमारी एक ऐप भी है, ऐप आपका इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कुछ भी टेक्निकल चीज है, सुमांशु रेड्डी आपकी हेल्प करेंगे। ही इज द टेक्निकल पर्सन। सो वी हैव प्रॉपर टीम इन प्लेस। दैट्स व्हाट आई वांट टू इम्प्रेस, कि एक प्रॉपर टीम है। ऐसा नहीं है कि एक या दो लोग हैं और वो हैंडल कर रहे हैं सभी पार्टिसिपेंट्स को, नहीं। हर एक का काम अलग अलग है, हर एक का सपोर्ट करने का तरीका अलग अलग है। तो इसलिए आप इसका बिल्कुल टेंशन ना करें कि मैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दैट्स आवर एक्सपर्टीज एंड दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू डू द क्रियास। एंड विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ माय पार्ट। थैंक यू। नमस्कार। Thank you so much, Anil ji, for sharing the program details. Swamiji has already joined us, so without delay, we will take up the question answer. Namaste, Swamiji. Good evening. I will just read out the questions. Nirmal Sisodia says, how many times I should hold my breath, including locking anals every day for improvement of drop foot? No, we are not teaching. This is not a class. हाँ, कितने बार आपको करना है, कितने बार रोकना है, and why do you think by doing that you will be able to come out of your drop foot? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा करने से आप ड्रॉप फुट आपकी ठीक हो जाएगी? So it's a very, very comprehensive thing. Just making an idea will not help. So this is not how it happens. Why drop foot happens? Drop foot hota kyun hai? Because your degeneration of nerve is more than regeneration. The regeneration is not happening properly. So regenerative factor को हमको ठीक करना पड़ेगा. So regenerative factor has been disturbed by what? Which force? Maybe your liver is not functioning well, that is why. Maybe your gut microbiota is not right. Maybe your absorption is not right. So we need to diagnose you, and that is why our diagnosis is done, and a special practice is given. A special practice is given, and the whole module is customized according to the diagnosis. Right. So it is not about how much you hold and how many times you hold your breath. It is not about breath hold. It is about kumbhak, the factor which you use to even hold your breath. That is kumbhak. Kumbhak is beyond breath hold. Okay. I'll take up the next question. Alok Gupta sir says, I have respiratory issue along with multiple joint pains. Whether I'm good for this Chikitsa or not, I don't know whether I can do anything with my breath. See, anyway, you are doing everything with your breath. You move your body and the breath changes. Not only the breath, there are a lot of things that changes in your body. The chemical ecosystem varies according to your thought process, according to your emotion, according to your activity. Everything is connected in this universe. If you segregate things and try to look into one part of the body or one functionality of the whole system, we will never reach to a solution. This is what is happening with allopathy. So, what is the best program for you? The best, see, you can joint pain. Why joint pain is there? You don't have to segregate joint pain from your respiratory disorder. So once your respiratory disorder is taken care of, your joint pain will also be taken care of. Pain happens due to inflammation, and if there are risk factors, then the body creates pain to take so that it indicates you to take care of it. So the best program for you will be Shadanga Pratishtha. There is another program, Shadanga Pratishtha. To put down your number with respiratory issues, and someone will direct you towards that program. Even Ashtaang Chikitsa is something which can handle these issues,
but in a completely different manner. So to start with, you should start with Ashtaang Pratishtha. Okay. Bhavna ma'am says I have retrolithisis of L5 over S1 causing nerve compression and pain in one leg. Can it be cured? You don't see these things. Some doctor has told you, isn't it? आपने तो देखा नहीं, किसी डॉक्टर ने बताया देखो L3 ये compression, nerve compression. What are you facing? Unless and until you start looking at life in its qualitative terms, you will never reach your solution. Quantitative analysis is what the whole modern medical science is based on, and they don't provide solution to 80% issues. Any chronic issue, they don't have a solution. So maybe surgically it can be corrected. आपका nerve compression हो रहा, वहां जाके थोड़ा gap create कर दिया, एक cushion डाल दिया, तो आपको आराम मिल जाएगा. मगर you are not correcting the fundamentals of your body. Why you are getting into some kind of a derangement of spine? Spinal arrangement क्यों बिगड़ रहा है आपका? Because the strength of integration of spine has been lost. This is an example I give to in every webinar. You take stones, flat stones, बीच में छेद कर दो. 33 stones. Put a rope inside, एक रस्सी बांधो और उसको टाइट खींच लो. The stones will remain in position till your tension is maintained. The moment your tension is gone, it will slip. All the stones will slip. तो ये जो tension है ना in structural integration के लिए जो tension बना के रख, इसको कहते हैं व्याना. Now, if Vyana is no more or Vyana is less, Vyana has become weak. आप सर्जरी एक जगह करा लोगे फिर दूसरी जगह प्रॉब्लम आता है because the integrating factor is not there. So when we teach you program, there are three things: Anganyasa, Atavinyasa, Kumbhak therapy. Kumbhak therapy again three things. The last one is Vyana, Kriya, Kumbhak. Because it's a Neuro Musculoskeletal program. Maintaining the structural strength or regaining the structural strength is the core. उसकी जरूरत पड़ेगी आप. Surgery is not a solution. The second thing is, if your body is not aligned, देखिए आप गाड़ी ले जाते हैं, ज्यादा ऊबड़ खाबड़ जगह पे ले जाते हैं, बहुत ज्यादा जाती करते हैं, उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है आपकी गाड़ी का. You go to a mechanic, get your alignment, get the alignment of the vehicle. But do you know how you are using your body? उसका alignment आप करते हैं. हाँ, हमारे कल्चर में there was something which was built in our culture where everybody has to do alignment at certain season, at certain time. पर आप alignment कर नहीं रहे हो अपनी बॉडी पे, तो आपकी बॉडी जवाब देगी. तो अलाइनमेंट इज नीडेड. तीन तरीके के अलाइनमेंट चाहिए आपके बॉडी को: नाभि, कौड़ी, नले. नेवल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऑफ द मिडल ऑफ चेस्ट, अलाइनमेंट ऑफ द थाइज. ये तीन चीजें चाहिए. ऑल दीज अलाइनमेंट आर बिल्ड इन द मॉड्यूल में ही ये तीनों अलाइनमेंट बिल्ड इन. सो द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट एंड one day you are able to do the whole practice and you'll see your body becomes very light. आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाए. So strength of integrity and alignment is needed. वो आपको करना ही चाहिए. Surgery is a very kind of a emergency handling of things, but it is not a solution. Right? Surgery solution नहीं है, emergency handling के लिए है कि जब आप कुछ नहीं कर पा रहे तो just to make you function a little bit, surgery can be done. Otherwise, the fundamentals need to be corrected. Okay. Sarla ma'am writes, can glaucoma get improved with Ashtaang Chikitsa? We have people who have done Kumbhak practices and they have come out of glaucoma. Even with their diabetes, high sugar level, they have come out of glaucoma.
So first of all, our idea of what is disease, diabetes क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो तो सही करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा. तो हाई शुगर लेवल इज नॉट डायबिटीज, ये आप लोगों के दिमाग में है. सिमिलरली ग्लूकोमा जो है वो कुंभक करने से, अष्टांग चिकित्सा से ग्लूकोमा को में बहुत फायदा होगा. Okay. The next question is how we can do kumbhak and how much times in a day? So how you can do kumbhak? So we need to train you for that. That program is all about learning how to do kumbhak. Right? ये program ही इसी के लिए है. Can we teach you in one webinar? No, we can't teach you in one webinar. The second part is customization is the core of the whole program. Now, आप एक चीज समझिए. What I can tell you at this moment is, you are all intelligent people. आप लोग समझदार लोग. आप भी जानते हैं what helps you, what doesn't help you. आपको मालूम है कि क्या चीज. एक पांव पे अगर आप ज्यादा वेट डालते हैं, then you shift the weight, isn't it? एक करवट लेके सो जाते हैं, दूसरे करवट में चेंज कर जाते हैं. So you know how to keep the body comfortable. But the second part of it is, had you been living in a very natural environment, प्राकृतिक अगर परिवेश में आप रह रहे होते, तो चारों तरफ ऐसे ऐसे फोर्सेस होते जो आपको फंक्शनिंग के लिए मजबूर कर देते. नेचर वुड हैव रूल्ड यू. आप रात में अगर खुले आसमान के नीचे सो जाएं, आफ्टर सनराइज यू कांट स्लीप, बट विद इन योर फ्लैट और रूम you can sleep throughout the day. So if nature would have ruled, we wouldn't have got into problem. But because we are cutting ourselves off all those forces and factors which would have ruled us in the best possible way, then we need to create the right kind of lifestyle. And there are three things that needs to be done to keep you healthy. Strength, balance and rhythm. तीन चीज आप स्थापित कर दीजिए. भाव, राग और ताल. Strength, balance and rhythm. भारत, आपके देश के नाम में ही कुंजी छुपी हुई है. The key to health is hidden. भाव, राग एंड ताल, भारत, भारत. तो स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम अगर आप अपने शरीर का बिल्ड कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका शरीर आपको ठीक करता है और कोई चीज ठीक नहीं करता. Now, to create strength, balance and rhythm, you use some support, some holding factor. आप पुश करते हैं अपने हाथ को, जोर लगाने के लिए आप कोई पकड़ते हैं किसी चीज को, चलने के लिए आप पकड़ते हैं ना जमीन को. ट्राई टू वॉक इन स्पेस. आप वहां स्पेस में जाके चलने की कोशिश कीजिए, आप नहीं चल पाएंगे. सो यू ऑलवेज नीड अ होल्डिंग फैक्टर टू डू अ फंक्शन. एक काम करने के लिए होल्डिंग फैक्टर चाहिए आप. यही मैकेनिज्म है कुंभक का. When you move your body, you need some kind of a support. अपने शरीर के अंदर एक जगह आप सपोर्ट लेते हैं उसका. ये मैकेनिज्म है कुंभक का. For your heart to function, for your liver to function, they need a kumbhak factor, or they do it on kumbhak mechanism. तो ये बहुत टेक्निकल हो जाता, because it is not from outside, it is from inside. आपका एनवायरनमेंट खराब हो गया, आप उसको नहीं बदल सकते. आपका फूड खराब हो गया, आप उसको नहीं बदल सकते. आपकी दवाइयां खानी पड़ती हैं आपको जबरदस्ती, बचपन से दवाइयां. यू आर अ ड्रग एडिक्ट. आप एक ड्रग एडिक्ट हो. तो इन सब फैक्टर्स को कैसे हटा देंगे? जब अपने आप को, अपने शरीर के अंदर आपको आपका स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम या रेजिलियंस होगा. कोई आपको धक्का देता है, कितनी जल्दी आप गिरते हैं, उतना रेजिलियंस है. लेकिन आप अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. Holding breath is also kumbhak. It is not the kumbhak mechanism. It is also kumbhak. But bending your body is also kumbhak. Rapid breathing is also kumbhak. Walking is also kumbhak. Liver function is also through kumbhak. Heart function is also through kumbhak. So that is why the program, because we diagnose you. आपका कौन सा kumbhak factor weak? And then we customize the whole program accordingly. So, can I teach you the program in this small webinar? No.
इट कांट बी टॉट इन दिस वेबिनार। तो ये टीचिंग के लिए है नहीं वेबिनार, मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे ठीक हो सकते। अगर आप ठीक होना चाहते हैं, प्लीज ज्वाइन द प्रोग्राम, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। आपने अपनी बीमारी में इन्वेस्ट बहुत किया आज तक, बीमारी बढ़ गई, हेल्थ में इन्वेस्ट करो, हेल्थ बढ़ जाएगा। Okay, Nandita ma'am says sometimes झंझनाहट methods होता है right hand में shoulder pain. हाँ, झंझनाहट महसूस होता है दो रीजन की वजह से, न्यूरो डिजेनरेशन, कंप्रेशन, न्यूरो कंप्रेशन। दो चीज बताया, कहीं पे नस दब रही है या नस कमजोर हो, ये दो चीज। कहीं पे नस दब रही है, अलाइनमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। डिजेनरेशन है, रीजेनरेशन नहीं हो रहा, तो आपको रीजेनरेशन फैक्टर को बढ़ाना, प्रकृति एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी को बढ़ाना पड़ेगा, वो कुंभक से बढ़ाएंगे। अलाइनमेंट भी कुंभक से हो जाएगा, रीजेनरेशन भी कुंभक से बढ़ाएंगे। अलाइनमेंट इमीडिएटली हो जाता है, रीजेनरेशन के लिए कुछ समय तक आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने शरीर को टाइम देना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिसेस करने पड़ेगा। ये दोनों ही चीजें अष्टांग चिकित्सा में, सो इट कैन बी हैंडल्ड। ये कंप्रेशन और दूसरा डीजेनरेशन, इसकी वजह से। Okay, now I would request Vijay Ganpat sir to please ask his question. Vijay Ganpat sir, your hand is raised. Okay, Alok Gupta sir, you can ask your question so that we don't waste time. Alok Gupta sir, I have already, okay, you have already asked. Okay, somebody is writing Shran Sheikh, severe anxiety, heartburn, insomnia, OCD, breathlessness, severe depression, trauma, tired. Okay, let's let's understand about any kind of disorder which has gone into the mind part of the body. The body and mind are not two different entities. शरीर और दिमाग जो है वो दो अलग अलग चीजें नहीं, सेम कॉन्टिन्यूम, इट इज द सेम कॉन्टिन्यूम। सो व्हेन यू से फिजिकलिटी, the quality which you can differentiate in the physicality is वात पित्त कफ। क्वालिटी जो आप शरीर पे देख सकते हैं वो वात पित्त कफ देख सकते हैं। माइंड में वही क्वालिटी आप देखते हैं, सत्व रज एंड तम। इट इज अ सटल पार्ट ऑफ द सेम फिजिकल क्वालिटी, वात पित्त कफ। Now, how mind functions? The mind function in three factors: dhi, dhriti, smriti. Cognizing factor, cognition, recognition. ये तीन चीजें हैं जिसपे आपका माइंड काम करता है, एंड वी कॉल इट प्रज्ञा, इसको हम प्रज्ञा कहते हैं। नाउ योर बॉडी एंड योर प्रज्ञा, दैट मीन्स योर माइंड, दे वर्क इन एसोसिएशन, वो दोनों साथ में काम करते हैं। तो इफ द रिस्क ऑन द बॉडी इंक्रीजेस, अगर शरीर पे रिस्क बढ़ जाता है, द बॉडी ट्राइज टू मिटिगेट द रिस्क, शरीर उस रिस्क को ठीक करने की कोशिश करता है। योर माइंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट, बट सपोज रिस्क इज कॉन्टिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कॉन्टिन्यूस रिस्क है, सडन रिस्क है तो आप उससे बचेंगे, बल्कि आपको वो स्ट्रॉन्ग कर देगा। लगातार रिस्क है तो वो आपको वीक करेगा। कैसे करेगा? आप एनवायरमेंट बदल देते हो, वो लगातार रिस्क है ना आपके बॉडी के लिए, इट्स अ कॉन्टिन्यूस रिस्क ऑन योर बॉडी। यू आर टेकिंग इन मेडिसिन रेगुलरली, रिलीजियसली यू आर टेकिंग मेडिसिन। सुबह उठ के आपको कोई काम नहीं, सबसे पहले मेरे को तो मेरी दवाई चाहिए, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस रिस्क डाल रहे हैं आप अपने शरीर पे। यू हैव चेंज द जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम क्रॉप खाते हैं सभी के सभी, तो वो कॉन्टिन्यूस रिस्क फैक्टर, कॉन्टिन्यूस रिस्क फैक्टर जब बॉडी पे होता है, व्हाट डज द बॉडी डू? जब अगर सपोज कीजिए आपके देश के ऊपर खतरा लगातार रहता है, तो क्या आपकी सरकार काम कर पाएगी? प्रेसिडेंट रूल चालू रहेगा। लड़ाई के समय प्रेसिडेंट रूल चालू रहता है, तो लगातार खतरा होगा तो प्रेसिडेंट रूल। तो हमारा प्रेसिडेंट कौन है? हमारी बॉडी का। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? थायराइड प्राइम मिनिस्टर है, और एड्रिनल ग्लैंड प्रेसिडेंट है। किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, वो प्रेसिडेंट है, वो रिस्क संभालता है। तो आप लगातार अगर रिस्क करेंगे तो बार बार एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी,
क्या कहते हैं, एड्रिनल ओवर, प्रेसिडेंट आ जाएगा, थायराइड नीचे चला जाएगा, थायराइड पीछे जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म कितना बढ़ रहा है दुनिया में, कोरिलेट करो, प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको, हाइपोथायराइडिज्म कितना बढ़ रहा है। क्यों हाइपोथायराइड, हाइपो का मतलब कम हो जाना, उसका फंक्शनिंग कम हो जाना। क्यों वो प्राइम मिनिस्टर नीचे जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऊपर आ रहा है। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी एंजाइटी क्रिएट करता है, या एड्रिनल फ्लक्चुएशन एंजाइटी क्रिएट करता है। तो आपके रिस्क जो बढ़ गए, आप टीवी देखते हो, न्यूज चैनल, वो एंजाइटी क्रिएट करता है। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, एंजाइटी क्रिएट करता है। आपकी सासू माँ बहू एंजाइटी क्रिएट करती है। तो और वो एंजाइटी आप पे ज्यादा असर कब करेगा, जब ये फैक्टर्स को हैंडल करने की क्षमता आपके शरीर की कम होगी। दैट मीन्स आपके शरीर का रेजिलियंस, सहने की क्षमता कम होगी। हमारी सहने की क्षमता बहुत कम हो चुकी है, हमारे शरीर की सहने की क्षमता कम हो चुकी है। अपने दादा दादी, नाना नानी को याद करें, आपका शरीर और उनका शरीर, वो कितना काम करते थे, आप कितना काम कर पाते। तो इस तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा करना क्या है। आपने अपने शरीर की सहन शक्ति को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे सहन शक्ति को? तो वेट उठाइए, आप 5 किलो का उठा सकते हैं। वेट अगर 10 किलो का उठा के देखिए, क्या करते हैं, हाउ डू यू लिफ्ट 10 kg वेट? यू होल्ड योर ब्रेथ, आप सांस रोकते हैं। लेकिन सांस रोकने का भी एक कुंभक है, एक मैकेनिज्म है। वो कुंभक वीक हो गया आपका, इसलिए सांस रोकने की क्षमता भी वीक हो गई आपकी। अगर वो वीक हो गई तो बढ़ाना क्या आपको, वो क्षमता बढ़ा दीजिए, आपका रेजिलेंस बढ़ जाएगा, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। सहन शक्ति बढ़ जाएगी, आपके एंजाइटी लेवल्स कम हो जाएंगे। एंजाइटी लेवल्स कम हो जाएंगे, सडनली आप देखेंगे कि आपका डिप्रेशन और मेंटल इशू, कोई भी माइंड पे जो असर आपको दिखेगा, आपकी प्रज्ञा का विस्तार नहीं हो पा रहा, तो उसी को हम डिप्रेशन कहते हैं, या कोई भी और बाइपोलैरिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, कोई भी नाम दे दीजिए। देखिए, नामकरण संस्कार से कोई ठीक नहीं होता, ये फिरंगी नामकरण बहुत करते हैं, नाम रख दिया हर चीज का, लेकिन ट्रीटमेंट किसी भी चीज का नहीं। तो ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा कि आप अपनी पहले सहन शक्ति को बढ़ाएंगे, उसकी वजह से एंजाइटी खत्म होगा, उसकी वजह से डिप्रेसिव टेंडेंसी चली जाएगी, आपकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका मेटाबॉलिक फैक्टर बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से आपकी लेथार्जी या घबराहट जो होती है, वीकनेस जो फील होता है अगर, तो वो भी ठीक हो जाएगा। ऑल्सो वी सजेस्ट सर्टन अदर थिंग्स, जैसे आप अपने गट के माइक्रोबायोटा को ठीक करेंगे तो भी आपको सपोर्ट मिलता है। अगर आपका डिटॉक्स प्रॉपर होगा तो भी आपको सपोर्ट मिलता है इन सब चीजों में, जो कि हम अपने प्रोग्राम में बताते हैं। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू इन अ वेरी वेरी शॉर्ट वे व्हाट इज व्हाट, ये मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बहुत छोटे में नहीं बताया जा सकता है, there are a lot of things which need to be addressed, but we don't have that kind of a time. This is not a teaching class. Anji, Okay. next. Supriya ma'am writes, does frequent urination problem resulting from a scooty fall be corrected, as there are no internal issues and all the reports are normal? Even MRI is normal, no internal injuries. So it's an issue where doctors are unable to understand exactly why it's happening. It's a psychological issue. बहुत सिंपल सी चीज, देखिए जब आपकी किसी चीज को झेलने की क्षमता कम हो जाती है, रेजिलियंस कम हो जाता है, then sudden happening in your life creates a permanent impression in your mind. अगर आपकी सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है तो आपके लाइफ में बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन भी आ जाएगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे लोग होते हैं छोटी छोटी चीजों में बहुत फर्क पड़ जाता है। So when the systemic integrity is weak, resilience is weak, handling a situation is weak, it's a weak aspect of your body. आपके शरीर का एक कमजोर पक्ष है अगर वो, और ऊपर से अंदर अगर हम देखें तो आजकल लिवर इश्यू सभी को ही है, डाइजेस्टिव इश्यू सभी को ही है। मे बी इट इज नॉट क्या कहते हैं, आपको टैग अभी नहीं मिला है, अभी आपको टैग नहीं मिला है कि यू आर डायबिटिक और you are hypothyroid or whatever, but see, the first thing which acts on your body is the aspect of your mind. So it's a shock, जिसको हम कहते हैं शॉक, वो शॉक की वजह से होता है। आप किसी को, मैं एक और एग्जांपल, तो आई कैन टॉक अबाउट इट लाइक फॉर वीक्स,
मगर कोई फायदा नहीं होना आपको, कितना भी मैं बताऊं। आप एक छोटे बच्चे को जोर से डांट दीजिए, जितना वो झेल नहीं पाता, उसका सुसु निकल जाता है ना, यही होता है। किसी को टॉर्चर कर रहे हैं तो सुसु बॉडी निकल जाता है। तो वो क्या, उसको कोई डिजीज है क्या? उसको कोई डिजीज नहीं है, उसको शॉक लगता है। So this shock, you can come out of this shock if you strengthen your psychology a little, if you strengthen the resilience of your body. तो उसको वो अगर ठीक होगा तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। आपके हेल्थ फैक्टर्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। Okay. Indu ma'am writes, I have hypothyroid patient since 25 years. Have been taking pills, only able to maintain the levels but not cured. I also have OA, knee and voice allergies. Can this Chikitsa cure me? क्या, आई डिडंट गेट इट, क्या क्या चीजें बताया? एक तो hypothyroid है since 24 years. Have been हाँ, taking pills or only able to maintain the levels. I also have a OA knee, osteoarthritis knee and voice allergies. वॉइस एलर्जी। Yeah. See, it is due to your hypothyroid. Things are a problem. So, but hypothyroid, which factor? The metabolic factor has gone weak. वहां पे आपकी ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। आपका लिवर भी वीक। See, when you're a hypothyroid, your T4 converts to T3 in your liver. So many people don't have a thyroid issue; they have a liver issue. Now, this liver is also responsible for the first step of metabolism in your body. And osteoarthritis is a metabolic disorder, जिसको हम recognize नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम पे। So when your tissues are not forming properly and there is an inflammation, आपके बोन टिश्यूज अगर रीजनरेट नहीं हो पा रहे और इन्फ्लेमेशन हुआ उसकी वजह से, तो दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। बट रीजनरेशन फैक्टर, द फर्स्ट लेवल ऑफ रीजनरेशन फैक्टर इज कंडक्टेड बाय लिवर। लिवर के द्वारा वो रेगुलेट होगा। तो लिवर अगर वीक है तो ये प्रॉब्लम आएगी, इन्फ्लेमेशन आएगा। लिवर अगर वीक है तो आपको हाइपोथायराइडिक के फैक्टर्स वो दिखा रहा है, सीन निशानियां दिखा रहा है। जो मार्कर्स हैं आपके केमिकल मार्कर्स, वो हाइपोथायराइडिज्म के आपको नजर आ रहे हैं। तो लिवर वीक है तो ये दोनों चीजें दिखा सकता है। लिवर को करेक्ट करने के तरीके अष्टांग चिकित्सा में ऑलरेडी हैं। सो यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम and you will get benefited in both the things. Okay. Indu ma'am also writes, I have lung infection due to pigeon. Can it be helpful? I am on steroids. Lung infection due to pigeon, so you can't live with birds, huh? So we can't live with birds, we can't live with animals, we can't live with the environment, we can't live with even humans. हमारी ये हालत क्यों हो गई? ऐसा क्यों हो गया? So ऐसा इसलिए हो गया बिकॉज हमारी सहन शक्ति कम हो गई। हमारी सहन शक्ति को बढ़ाएंगे, ये ठीक हो जाएगा। लंग इन्फेक्शन ड्यू टू पिजन, कैन इट बी हेल्पफुल? पहली बात तो स्टेरॉइड से आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब तो आप अगर नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे तो नेट पे जाइए और ढूंढिए स्टेरॉइड क्या क्या करता, गारंटीड लाइफ खराब हो जाएगी। क्या इसको ठीक किया जा सकता है? 100%। बहुत सारे लोग स्टेरॉइड से निकल के आ गए। सो अगेन लंग्स वी ट्रीट इन अ डिफरेंट प्रोग्राम कॉल्ड षडांग प्रतिष्ठा। आप वो वाला प्रोग्राम अगर ज्वाइन करेंगे तो you can easily come out of. There are a lot of people who have come out of such things. स्टेरॉइड्स छोड़ दिया, इनहेलर्स छोड़ दिए, तो आप प्लीज अपने ऊपर थोड़ा काम करें। Anil Trivedi, sir, you can ask your question, please. I have unmuted you. Please unmute yourself.
Anil Trivedi, sir, are you able to unmute yourself, please? Okay, DK Mishra, sir, writes, can multiple problems be addressed in one program? See, your body doesn't work in a differentiated manner. It works in an integral manner. It's like a net. अगर एक जाल है तो आप एक तरफ से उठाओगे तो भी जाल उठेगा, दूसरे तरफ से उठाओगे तो भी जाल उठेगा. And we are also trying to appreciate this factor. That is why what we do, we try to find the underlying cause. इसका जो root cause है ना, वो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं. अगर आप उसको एड्रेस करेंगे तो your multiple issues can be addressed. एक जगह से आप पकड़ेंगे सारी चीजें पकड़ में आ जाती हैं. Maybe if something has got onto the body, शरीर पे अगर किसी चीज का असर आ चुका है, it will take some time लेगा. And after addressing many problems, if you want to address another specific problem, it can also be, वो भी किया जा सकता. But yes, your body, the nature of the body is such. If you pick up one thing, start from there, multiple issues can be addressed. So yes, one program can address multiple issues. Okay, Satish, sir, you can ask your question. Swamiji, thanks a lot for this webinar, and it is actually an eye-opener in not many senses. I think we always probably realize this, but it was a very helpful one, and I think thank you for putting us all in the right direction. Okay. There is one question, however. I'm joining the program for myself, but I have a question for my mother. She suffers from a macular degeneration of the eyes. And she has continuously, gradually over last 8-9 years, lost her vision, which is almost at a very minuscule level today. No doctor, no able to help her out. Will this form of Chikitsa or any other form, if you recommend, is there available for her? Macular, you said macular degeneration. Macular degeneration, yes, sir. Again, degeneration. Right. See, macular degeneration also, macular degeneration, see, at this point of time, there are issues like pigmentosa, retina pigmentosa. Retina pigmentosa, macular degeneration. These are the two things. And even taking up to glaucoma. This is happening because there is a factor in the body which is called as a distributive factor. आपके शरीर में ना चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने की एक शक्ति है. That factor which distributes things across the body is called as समान वायु. Distributive factor को हम समान वायु. Now there is a pigment there somewhere which needs to be converted into something else, or it needs to be distributed across. वो distribution factor weak होने पे you'll see pigmentation. Now pigmentation is a kind of a nutrition. So nutrition जो है, it is not getting consumed in the body. Not getting consumed means what? Your tissues, the regeneration of tissues will not be able to happen. Now, if you are talking about eyes, one thing I want to bring attention to people. देखिए थोड़ा भी अगर आप सोचें, you are all Indians, आप भारतीय हैं. Indians are intelligent species. In fact, the whole civilization has happened out of India. People have gone out of India and the whole civilization happened. If you just take off your your mind, the way your mind has been cultured through education, you know how to correct something, because the fundamental aspect of treatment or handling the body is embedded in everybody. So अगर आप ये देखें कि आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, will it not have an root in your digestive system? Can it not have a root in your digestive system? It can have. So there is something called a process of conversion of something into something else, like your food converts to your tissues or blood. First it converts to your blood, rasa, rakta. This is first level of metabolism. Rakta, mansa, tissue. Now, if your blood doesn't convert into tissue properly, there will be degeneration. Regeneration will not happen properly.
Now, blood in Ayurveda also, it is called as a Pitta aspect. Now, your eye is a Pitta aspect. Your eye is always connected with Agni factor. Your digestion is always connected with Agni factor. So suppose your digestive factor is disturbed, your eye will have an impact. See, barring accidents, injuries, अगर उसको आप हटा दें, उसको अगर आप हटा दें, then you can actually treat any kind of an issue of eye or for that matter anything. But you need to understand how things happen fundamentally. बाहर से observation से काम नहीं चलेगा, right? Quantitative study of life will not help. You will have to move towards qualitative study of life. So all the modern diagnosis is quantitative study of life, which is a dynamic entity. वो variable होगा. अभी टेस्ट कराया, 1 घंटे बाद टेस्ट करो, वो अलग हो जाएगा. So what are you taking as a baseline? That itself is a big question mark. That is why modern medical science is not able to treat 80% of the problem. Only infection, barring infection, nothing else. उसमें भी resistance हो जाता है. So we need out of the box thinking. And what I'm saying is, I'm just saying it. I'm just seeing and saying things. आप लोग समझदार, आप लोग समझ सकते हैं सब चीजों को. And you can also start questioning. तो क्या इसको हम एड्रेस कर सकते हैं? बहुत आसानी से एड्रेस कर सकते हैं. To go in very specific of a disease, we also need to refine, do a lot of research in this area. We are doing research, and we also intend to do research in this area. There are also a branch of science, which is a branch of Ayurveda, which is completely devoted to eye disease. Abhishand. Now we don't even know. So Abhishand is completely devoted to eye disease. And it says any kind of eye disease happens because of a factor called Abhishand. If you correct that Abhishand, your eye disease will get corrected. बहुत सारी चीजें explore करनी है. There is another branch of treatment called Rasa Shastra. Now that is an emergency form of medication which uses a lot of things like poison, which uses a lot of things like minerals, different kinds of minerals. We have lost the science. We have to revive those science. Then only we'll be able to address. Otherwise, what will happen? Today something will be said. कल को थोड़ा और research करके पता चलेगा नहीं जो पहले कह रहे थे वो तो गलत था. Earlier cholesterol was bad. Now cholesterol is good. Any kind of cholesterol is good. So what are we doing? If we reach out to the core aspect of life from outside, it might take centuries. And through centuries, we'll be killing many, many people. Religion has killed millions of people. Modern medical science or modern science will kill billions and trillions of people. So we need to get it to our senses. हमको अपनी senses में आना पड़ेगा वापस. Thank you so much. Saraswati ma'am, you can ask a question. I'll unmute you. Namaste, Swamiji. Namaste, ji. And I'm suffering with the polymyositis and shoulder girdle syndrome since 6 years, and I am on the treatment of steroid therapy and also on the calcium tablets. I'm unable to walk freely, and I'm unable to lift my hands above the shoulder level, and I am unable to climb the stairs. Okay, I'll pick up one thing: polymyositis. Yeah. Right, and tell you how you can come out of this. When you pick up a terminology like polymyositis, please try to connect with what problem you are facing. So polymyositis, inflammation throughout muscles. Muscle में inflammation, right? Now, I'll tell you one thing. Just scratch your hand with your nails. So you will have inflammation. जलन होगा ना? जलन का मतलब inflammation.
Inflammation internal. Polymyositis is internal inflammation. I'm giving you an analogy. If you scratch your skin, it will start, you'll get a burning sensation. That burning sensation is inflammation. What do? You put a little ghee. Suddenly the burning comes down. Right? Now what is happening? Right? What is happening? When you put something which is unconducive for the body, suppose you put in a pill or a vaccine, or you go through an immunization, or a little infant goes through an immunization. Now that immunization is that vaccine is created with a lot of chemicals. That chemical goes into your body through whichever way. Suppose the drop is put, it will go to your liver. It will bombard your liver. It's a chemical bombarding that you do. The moment a chemical bombarding is done on the liver starts getting into inflammation. So what will your liver do? The functioning will become down, but liver is such an organ. Till 95% of liver is not damaged, it will not show any indication. You will not get it in any test. Aapko test mein milega hi nahi. But the functioning has got impacted. Liver is in inflammation. Now, liver is a factory where every kind of food which converts to juices goes there, and from there it converts to or goes into blood, converts to blood and goes to other tissues. So liver apna kaam nahi kar payega. It will not be able to do its function properly. So what will do? The metabolism will become weak and there will be a lot of waste products. So proper nutrition, your body will not get nutrition because your liver is not able to metabolize properly. Lot of toxins and unused things will get produced. These toxins create inflammation across your body, in your joint, in your muscles. Now suppose the muscle or what we say, the second factor, rasa, rakta, mansa. So this is called as deha bala, dhatu bala. Your dhatu bala, converting something into a tissue, that factor, if it is weak, then your muscles will not form properly. Rather, there will be a lot of toxins around muscles, improper tissues which has not been built, which has not converted to muscles will be there. Lot of waste, which will create muscle inflammation and muscle weakness because regeneration factor is not there. तो क्या करना पड़ेगा? स्टीरॉइड से आपका दर्द खत्म हो जाएगा because steroids make you a zombie. आपको zombie बना दे तो आपको दर्द नहीं होगा ना. So do you want to become a zombie? Or is it a treatment? Then what will steroid do? It will put your immunity down. Immunity आपका खराब कर देगा. Further degradation of all the strength and metabolic factors. वो आपके metabolic factor को खत्म कर देगा. You will not get multiple physical issue. You will get into multiple mental issue. This is not a treatment. It's a management. Emergency management can be done through it. It cannot be applied as a treatment. तो आपको क्या करना पड़ेगा? One thing I'll tell you, just cool down your body, you'll see your pain factor will come down. अपने शरीर को ठंडा कर दीजिए, किसी भी तरीके से कर दीजिए. Improve the detox. अपने को थोड़ा दस्त ले आए शरीर में. You get into a diarrhea situation. You'll see your pain factors will come down. So very simple things which can handle, but not a treatment. Again, cooling down is not a treatment. But strengthening the liver, the factor of dhatu bala, improving dhatu bala, these are treatments. This is what we are doing through the Kumbhak therapies. तो आपको क्या ये स्टेरॉइड से निकल सकते हैं? 100% निकल सकते हैं आप स्टेरॉइड. Your pain factor can come down. You will be able to use your body nicely. You can use some support, but every time we think of some kind of a support, we always think of a chemical. Painkiller, steroid, these are not good things, and there is lot of proof towards it. आप आँख खोल के देखिए. Adverse drug reaction and number needed for treatment. Medicine do not cure you. This is a fact. Your body cures you. So improve the recovery factors of your body
आपके शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए, तभी आप रिकवर हो पाएंगे। अदरवाइज दीज थिंग्स विल लीड यू टू अ वेजिटेटिव लाइफ। एक दिन बिस्तर पकड़ लेंगे, किडनीज विल फेल, organs will fail, heart will fail. This is what is happening to people. Please, you have a responsibility towards your body. इसको सपोर्ट कीजिए, इसको सहायता कीजिए। Emergency treatment can be done, can be used. At that time, anything can be used, but not for treatment. Okay, anybody else who from the participants who would like to ask their questions? We have finished the chat questions. I think nobody wants to ask any more questions. Anybody from the participants who would like to ask their questions? So Swamiji will be able to answer your question. So timings of the sessions, everything will be shared in the WhatsApp group. So kindly refer to that. It's in the evening, by the way. Okay, so I think we have come to the end of the webinar since nobody has any questions to be asked. So Yeah, so we'll call it off. आप लोगों का वेबिनार ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की लाइफ बहुत सुंदर हो, हेल्दी हैप्पी लाइफ हो, इसी शुभकामना के साथ में। Thank you so much, Swamiji. And good night and all the best to all the participants. Thank you so much for joining us in the webinar.